ला यदखुलुन अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन खर्दल मिन ईमान। हम यहीं से अपने बात को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब मुसलमानों को तौहीद को समझकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अब मैं इसके बाद इंग्लिश में तकरीर करने के लिए दावत सुखन दूंगा कि वह आए और इंग्लिश में तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Honorable guests, respected teachers, dear brothers and sisters, I am Kausala. I study in third class. Today I want to talk about the purpose of life, worship of Allah. Allah says in the Holy Quran in Surah Mu'minun ayat number 115. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Did you think that we created you in fun and that you would not be return to us? The Holy Quran teaches that the purpose of life is to worship our Creator by believing in Him and by doing good deeds. Let's now the meaning of ibadah or worship. Ibadah worship doesn't one limited worshiping 5 times in a day. It also includes some good things that we do in our daily routine. It also means why the sunnah, because Allah has asked us to follow the sunnah and obey Allah. Allah says in the Holy Quran in Surah Zariyat ayat number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. And I created not the children and mankind except that they should worship me alone. Seeking the pleasure of Allah is the aim of every sincere believer. As I said, our daily life we can worship Allah by following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his guidance. From down to dusk, whatever we do will be our worldly needs. I also may become the worship if it is done according to Sharia. Allah says in the Holy Quran in Surah Mulk ayat number 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Who created death and life that you might try you as to which of you is better indeed. He is the most mighty, the most forgiving. Abu Hurairah reported the Prophet and peace. Therefore he said, Allah Almighty said, "Oh son of Adam, be before my worship and with your heart with richness and elevate your poverty. If you do not do so, I will fill your hands with problems and never elevate your poverty." Our hardships in life have a purpose too. They are a test of our faith and they also purify our souls. As Allah the Almighty says in the Holy Quran in Surah Ankabut ayat number 2. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Do the people think that they will be left to say we believe and they will not be tested? At last we pray for Almighty Allah that He may guide us towards the right path. Ameen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अब मैं इसके बाद आप हज़रात के सामने एक कलामा पेश किया जाएगा।
जिनको पेश करेंगे ज़मीर और उनके रफ़ाक़ा। इन लोगों से गुजारिश है कि